Hi, buddy. Welcome back. Right. This is the second part of the discussion on enzymes. In the first part, we have discussed a few points about the action of enzymes and how they bring about increase in the rate of reaction, and what is the means of action, and what is enzyme substrate complex. Right now, very quickly, if we can just revise it. Right. So what happens first is the substrate fits into the active site of the enzyme. It forms a ES complex, enzyme substrate complex. So this is an ES complex, right? Then the enzyme starts acting on the substrate, transition state structure होगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंड एंजाइम फिर से फ्री हो गया, मतलब उसके एक्टिव साइट में अब दूसरा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आ सकता है. सो अगेन द सबस्ट्रेट कम्स, अगेन फॉर्मेशन ऑफ अ enzyme substrate complex, right? This is how the entire process keeps on happening, right? So this was a very quick revision of the enzyme substrate action. Now the enzyme can have the hypothesis that were given out for how is the enzyme acting. There are two hypotheses given out. I'll just make a brief mention because nowhere is this entire thing coming into picture. Uh, One is lock and key hypothesis, and the other is induced fit hypothesis. Obviously, in hindsight, when we have studied the action that substrate fits into the active site, that means obviously the shape of the active site is so important, and it has to be very specific according to the substrate. So specificity is a very key here. So lock key hypothesis में क्या है देखो, the shape of the substrate and the shape of the active site, right? They fit in like a lock and a key. And hence this hypothesis is called as a lock key hypothesis. But look at the other part, right? Now look at the shape of the active site, look at the shape of the substrate, right? They are not matching only. Substrate आ रहा है active site की तरफ, ये देखो फिट ही नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है. अब एक्टिव साइट अपने आप को सबस्ट्रेट के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है ताकि वो फिट हो जाए, राइट? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट, राइट ना? ये फिट करवाया, राइट? और देखो प्रोडक्ट्स रिलीज होने के बाद एक्टिव साइट जैसे पहला था वैसे हो गया ये, ठीक है? तो अब इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट, right? So obviously, no evidence is pointing out to lock and key hypothesis being more applicable. That gives that enzymes are specific to substrates. ठीक है? So if you are talking about an enzyme like sucrase, okay, it will act only on sucrose, not on something else, right? Because uska active site will give only accommodation to the molecule of sucrose and nothing else. Okay. So this was the lock key hypothesis and the induced fit hypothesis. Now coming to what are the structures, what are the factors, I'm sorry, what are the factors which affect the activity of an enzyme? The first two factors that we will talk about are temperature and pH. How does temperature affect the activity of an enzyme? We have made mention of that before in the start itself, right? ना कि ज़्यादा temperature high चला गया तो the enzymes as a protein will get denatured, bonds break हो जाएंगे, right? And enzyme टूट जाएगा उसमें. Okay. Now these two graphs obviously are there in the NCERT. We've taken it from there only. We'll just try and make sense of both these graphs. Okay. Okay. ये देखो. Again, first check what is X and Y. Y पे we have enzyme activity and X पे both pH as well as temperature. Right? पहले pH check करते हैं हम लोग. Right? So for what pH, how much is the enzyme active? Now look at enzyme activity.
Can you see that enzyme is at its peak here? Right ना? अगर ये enzyme activity का ग्राफ है, सो एंजाइम उसके हाईएस्ट पीक पर है, लेकिन कब? जब वो ये पीएच पर है, राइट? वॉट एवर द वैल्यू, वी जस्ट कंपेयरिंग द पीएच एंड एंजाइम एक्टिविटी, राइट? सो जब पीएच की वैल्यू ये रहेगी तब एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट रहेगी, राइट ना? लेट्स से मैं पीएच को थोड़ा सा कम करता हूं, आई विल मेक पीएच अ लिटिल लेस, right? Please bear with me on this graph. Look at the activity. Can I see the activity is reduced now? मैं pH को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, राइट ना? ये देखो pH को बढ़ा दिया. Can I see the activity is again reduced now? So क्या लिखा है देखो यहाँ पे, activity declines both below and above the optimum value. So this is the optimum value. This is the optimum value of pH. So if you are talking for an enzyme, let's say for example pepsin, you know pepsin, right now what is the pH value in the stomach, right now due to hydrochloric acid is 1.8, राइट? सो अब ये इसका पेप्सिन का एक्शन इज हाईएस्ट एट 1.8. सो जब 1.8 होगा तो पेप्सिन की एक्टिविटी हाईएस्ट होगी. अब उसको 1.6 कर दो, एक्टिविटी कम हो जाएगी. उसको 2 कर दो, एक्टिविटी कम हो जाएगी. सो 1.8 इज द optimum pH for the maximum action of that particular enzyme. If you give example of pepsin, राइट? पैनक्रियाटिक जूस 8.8 है कि नहीं? सो 8.8 pH पे वो मैक्सिमम काम करेगा वो, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर दैट सी द सेम फॉर टेम्परेचर आल्सो, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल दीज फैक्टर्स एज एंजाइम ऑप्टिमा. एंजाइम ऑप्टिमा बिकॉज दे वर्क, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर pH पे ही उसका पीक होगा एकदम, right? Can you see the graph of temperature is the same as that of pH? That means at a particular temperature, ये वाले temperature पर ही उसकी activity highest है, right? Temperature कम करो, activity कम हो गई. Temperature बढ़ाओ, activity कम हो गई. You have to know how to read the graph, please, right? So this graph is very easy. Sometimes students make a lot of mistakes in reading this graph, please. Sorry. So each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called optimum temperature and optimum pH. Enzyme optima. Activity declines both below and above the optimum value. I hope this point is very, very clear. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature will destroy the enzyme activity, obviously because proteins are denatured by heat. So low temperature preserves the enzyme in an inactive state, right? See, I can give a very relatable example for milk, right? मिल्क हम लोग बाहर से लेकर आए, राइट? हमने उसको रख दिया रेफ्रिजरेटर में, राइट? उसको कोल्ड टेम्परेचर दिया, लो टेम्परेचर दिया, राइट? सो जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स हो गए ना वो इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्शन नहीं होगा बैक्टीरिया का, they are inactive. Now the same refrigerated milk, I remove it outside and keep for some time. Slowly, gradually, it comes back to room temperature. What will happen to the bacteria wala enzyme? They will start getting higher temperature now, optimum temperature. अब जो बाहर रखा हुआ दूध है वो खराब हो सकता है, राइट? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही दूध घर में आता है हम उसको बॉईल करते हैं. What does boiling do? हाँ, it will inactive, it will destroy the enzymes, denature the enzymes now, right? That's why you always boil, pre-cool, and then put in a refrigerator, right? Because higher temperature will kill the enzymes, lower temperature will deactivate the enzymes. This is the difference between high temperature and low temperature as far as enzymes are concerned, please.
So first two factors for effect of pH on enzyme, effect of temperature on enzyme. Next is effect of concentration of substrate. How does concentration of a substrate affect the activity of enzyme? Right. This also diagram has been given in the NCERT, please. With increase in substrate concentration, slowly, gradually up बढ़ाओ. The velocity of enzymatic reaction first rises at first. It will go on increasing. Right? Let's check the graph, everybody, please. Right? I hope that NCERT is open in front of you. So if you are dealing with the graph, अपना rule क्या है? First check what is on X, what is on Y. Right? On Y, we've got velocity of the reaction. V है. Right? On X axis diagram में लिखा है S. Right? S stands for substrate. So my humble request is, if that is written only like this, S लिखा है ना, तो यहां पे आप लिख दो substrate concentration पूरा. Substrate concentration. So whenever you are reading this diagram, please you always follow the track of S. S मतलब substrate का concentration. Please, this is very, very important. Again, a very big area where mistakes are made. Okay, now let's just try and read this graph, please. Okay, now have a look here. ये देखो. At this point, there is zero substrate, zero velocity. मैंने substrate डाला यहाँ पर. So, do I have increase in the velocity? Yes. I increase the substrate concentration. So, do I have increase in the velocity? Yes, definitely. Yes. Still keep on. You forget this. What is Km? ये भूल जाओ इसको please. मैंने बढ़ाया. So do I find that with every increase in substrate, the speed, the velocity of the reaction is increasing? But can you see the curve? Can you see this curve? It's not going right like this, it's just a straight line की तरह नहीं जा रहा. The curve is bending. Right? देखो क्या लिखा है यहाँ पे. The reaction ultimately reaches a maximum velocity. Look at this value यहाँ पर. ये देखो Vmax. Dotted line है यहाँ पे. Vmax. So ultimately Vmax पहुंच रहा है. Vmax तो यहीं पहुंच गया था. Right? यानी जब हमने concentration यहां पे लाया, इतना सारा सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, तब जाके वो Vmax तक पहुंचा. लेकिन अगर मैं इसके बाद भी सबस्ट्रेट, राइट ना, इसके बाद भी मैं ऐड कर रहा हूं, तो Vmax तक तो पहुंच गया है. Vmax तक ही रहेगा, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं. मतलब एनी फर्दर एडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. एंड दैट टू दिस इंक्रीज हैज नॉट बीन प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे सबस्ट्रेट डालते जा रहा हूं उतने प्रोपोर्शन में, अगर उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ता तो दिस ग्राफ वुड हैव बीन स्ट्रेट, नॉट दिस हाइपरबोलिक कर्व. ठीक है, राइट? दिस इज द मैक्सिमम. सो एवरी एंजाइम हैज अ Vmax वैल्यू. एवरी एंजाइम हैज अ Vmax वैल्यू. सो Vmax तक पहुंचने के बाद तुम कितना भी सबस्ट्रेट डालो, वो उसके आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारे एंजाइम के एक्टिव साइट सैचुरेट हो गए, सब भरे हुए हैं. अब एक्शन कहां से होगा? आ रहा समझ में? ठीक है, राइट? सो द रिएक्शन ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeded बढ़ाते जाओ any further rise in concentration of substrate, because the enzyme molecules are fewer and they're the substrate molecules. अब saturate हो गए सारे active sites. There are no free enzyme molecules for action now. Right? Now come to something important, more important rather. Right? On the x-axis, we have something called as Km.
राइट। तो सबसे पहले ये Km एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस अपना क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एक्स एक्सिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस Km is some value of substrate concentration, right? See, we have this difficulty every year, please people forget what is Km, right? क्योंकि ये ग्राफ जो है ना वो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, लेकिन Km क्या है उसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है. So if it is given in the NCERT, you have to know what is Km. Now, when the substrate, I start adding substrate concentration, I start adding substrate. At one point, right now, at one point, मैंने इतना substrate add कर लिया है कि it reaches half the maximum velocity, Vmax upon 2. Right now, this is Vmax. This is Vmax upon 2. So Km is that value of concentration of substrate at which half the maximum value of the half the Vmax value is reached. Right? Look at this. इतना ऐड किया तो आधा वेलोसिटी हुआ और फिर इतना ऐड किया तब जाके बाकी आधा हुआ है, Vmax पे पहुंचा है वो. Are you getting the difference, please? So every enzyme will have a Km value. Every enzyme will have a Km value. Right? अब यहां पर ग्राफ देखो दिखा हुआ है. Let's say this is Km value for a particular enzyme. On the same, I'll make another graph for another enzyme, comparing the velocity and again, right? अब just try your best. Okay, ये देखो, I'm starting from here. I have drawn this graph. I'll draw one more graph for you all. Right? Okay. आगे चला गया, राइट? अब देखो, तीन एंजाइम अपने पास है, तीनों की Vmax वैल्यू सेम है, तीनों की Vmax वैल्यू सेम है. ये जो पहला वाला है उसकी Km वैल्यू यहां पर है, ये जो ब्लू वाला है उसकी Km वैल्यू, ये देखो यहां पर Vmax 2 रीच किया है उसने, तो उसकी Km वैल्यू यहां पर है. और जो लाल वाला है यहां पर, वो यहां पर Vmax 2 रीच कर रहा है, मतलब उसकी Km वैल्यू यहां पर है. सो तीनों के Vmax के वैल्यू सेम थे, लेकिन तीनों को Vmax पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, अलग अलग लगा, राइट ना? ये यहीं पे Vmax पहुंच गया, इसको Vmax यहां पे था टाइम लगा, ये तो अभी तक Vmax पहुंचा नहीं, आगे बढ़ेगा तो अभी और. So what does this tell about the enzyme and substrate? Km जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमको एंजाइम की एफिशिएंसी का मालूम पड़ता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है, राइट? तो अगर किसी की Km वैल्यू कम है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है, वेरी फास्ट. So comparing Km values gives us an idea of the efficiency of an enzyme. This Km, friends, this Km is called as Michaelis constant, right? अब इससे जो इक्वेशन डिराइव होता है उसको Michaelis Menten इक्वेशन बोलते हैं, जो अपने को जरा भी नहीं करना है, प्लीज. We just have to know what is this Km called as, Michaelis constant, right? Right? Enzyme attains half its maximum velocity. Right? We can say the concentration of the substrate at which half the maximum velocity is attained. So Km is lying on the x-axis
एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट है, दैट मीन्स Km इज अ वैल्यू ऑफ द concentration of the substrate at which half maximum velocity of reach. Vmax by 2 जहां पे पहुंचता है, that value of substrate is called as K. Right? This is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं एंड यू शुड नो व्हाट इज दिस ग्राफ, दिस थ्री ग्राफ्स, ये टेम्परेचर वाला ग्राफ, पीएच वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, तीनों भी ग्राफ्स जो है वो आने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर थ्री कंडीशंस which are important, you should remember, which regulate, which affect the activity of an enzyme. The fourth factor which affects the activity of an enzyme is called as an inhibitor. It's called as an inhibitor, right? An inhibitor is a substance which inhibits the activity of an enzyme. एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, दबाता है या रोक देता है कंप्लीटली, उसको बोलते हैं इनहिबिटर, राइट? वेरी क्विकली लेट्स चेक, चलो। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor. Right? Look at this. Now we've got an enzyme called as succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase. It acts on succinic acid. It is acting on succinic acid. ये succinic acid का structure है यहाँ पर. अब there is one more structure which is called as malonate or malonic acid. उसका structure ये है. अब दोनों के structure जब देखेंगे ना तो बहुत close है. देखो CH2 के अलावा बाकी सब कुछ same है यहाँ पर. यहाँ पे 2 बार CH2, यहाँ पे एक ही बार है, बाकी सब same है. मतलब ये structure जो सबस्ट्रेट है उससे स्ट्रक्चरली सिमिलर है, जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरली सेम है, सिमिलर है, राइट? उसको देखो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया यहां पे, ये सक्सिनिक एसिड है, ये उसका एक्टिव साइट है एंजाइम का, ये मेलोनिक एसिड है, देखो यहां से स्ट्रेट बनाया हुआ है, यहां से थोड़ा कर्वेचर दिया हुआ है, लेकिन ये पार्ट सेम है. तो अब मुझे बताओ ये दोनों पार्ट्स ये एक्टिव साइट में फिट हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं, राइट ना? लेकिन दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर सक्सिनिक एसिड एंड नॉट फॉर मेलोनिक एसिड. लॉक की हाइपोथेसिस, ये इसी पे एक्ट करेगा, लेकिन ये जो मेलोनिक एसिड है वो उसका स्ट्रक्चर सेम है. तो सक्सिनिक एसिड के पहले अगर मेलोनिक एसिड यहां पर एक्टिव साइट में आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा. सबस्ट्रेट तो बेचारा खाली बाहर बैठा रहेगा, एक्टिव साइट में जाएगा मेलोनिक एसिड और एंजाइम मेलोनिक एसिड पे एक्ट नहीं करेगा, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी. एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी. सो मेलोनिक एसिड क्या हो गया? इनहिबिटर. Melonic acid becomes a inhibitor, right? So अगर दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है, दोनों एक्टिव साइट में फिट हो सकते हैं, तो कैन वी से दे बोथ आर कंपीटिंग फॉर द एक्टिव साइट? They both are competing for the active site. That's why melonic acid is called as a competitive inhibitor. It is called as a competitive inhibitor, right? There are non-competitive inhibitors and other types of inhibitors only, but your NCERT describes only what is a competitive inhibitor, right? So melonic acid is a competitive inhibitor for succinic dehydrogenase. Why? Because melonic acid has a structure which is थोड़ा similar to succinic acid, जो उसका natural substrate है. Right? So this is, so the fourth factor which affects the activity of an enzyme is an inhibitor, right? Now पहला temperature, दूसरा pH, तीसरा
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहां पे Km पढ़ा हम लोग ने, और चौथा व्हाट इज एन इनहिबिटर. So there are four factors which are affecting the activity of an enzyme. Now enzymes का classification, right? Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses. Now this is nomenclature, right? ना ये तो standard classification है, right? This is again is given in the NCERT, not really something which you can explain anything about, right? Except that it is 6 classes, each with 4 to 13 subclass, and named by a 4-digit number. Right now, every enzyme is named by a specific 4-digit number. That's how the classification goes. Now, classification is based on the action of the enzyme, right? So you have one class of enzyme which is called oxidoreductase or dehydrogenase. They catalyze oxidoreduction between two substrates, right? So when alcohol comes with NAD, right, it causes, right, ऑक्सीडो रिडक्शन, राइट. देखो S ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिड्यूस हो गया. हाइड्रोजन जो है यहां सर NAD में चला गया, राइट. ओके. ट्रांसफरेज, राइट, एंजाइम्स कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप. ग्लूकोज प्लस ATP क्या हो गया? फॉस्फोरस फ्रॉम द ATP will get transferred to glucose to form glucose 6-phosphate. So hexokinase is actually a transferase. Hydrolase, right now they catalyze breakdown of larger molecules into smaller molecules, right? Sucrose is a disaccharide. When you add water to it, right, what will happen? The molecule breaks into glucose and fructose. So larger molecules into two smaller molecules, right? It is basically the water which is causing the breaking down. So it's called as a hydrolase. So what is a sucrase? It's a hydrolase. So all digestive enzymes basically are nothing but hydrolases. Fourth is lyase. Lyase means breaking down, catalyzing or removal from a group, right? Na? ये देखो. Can you see the removal of carbon, right? No? So aldolase is a lyase, decarboxylase, removal of carbon dioxide, carbonic anhydride, right? Now they are all lyases. Removal by mechanisms other than hydrolysis. यहाँ पे पानी involved नहीं है. If water is involved for breaking down, it is hydrolysis. Water is not involved, still breaking down is occurring, it is lyases. Isomerase, obviously you know what's an isomer is, right? Now, so the glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, they are both isomers of each other, right? So वहाँ पे isomerase enzyme is used. Okay. Ligase is bringing together. Ligation मतलब गांठ बांधना, right? Now, to tie is called ligation. So when you bring together two compounds, right? Now, like for example, RUBP carboxylase. Photosynthesis अभी तुमने start किया है. RUBP carboxylase is the one which will get carbon dioxide in the photosynthesis. So तुम्हारा RUBP जो है ना, वो राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है. जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो 6 कार्बन बनेगा, राइट? तो वहां पर RUBP कार्बोक्सिलेज यूज होता है, right? Obviously the enzyme DNA ligase वगैरह you will study in biotechnology how it is used to bring about two segments of DNA together. So these enzymes are called ligases. So please, this is class 1, this is class 2, this is class 3, this is class 4, class 5, class 6. You may be asked questions according to what is the class 6 enzyme amongst the following. So your answer would be ligase. So you have to learn it in order. Lastly, coming to a topic called as cofactors. What are cofactors? Now, enzymes could be have one polypeptide chain, more than one polypeptide chain, right? Now, or several of them. Now, in a lot of cases, enzyme का action depends on a non-protein structure also. मतलब एंजाइम जो प्रोटीन है खुद और वो नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर साथ में आएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कंप्लीट होती है.
तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐड हो रहा है ना, वो होता है कोफैक्टर. दैट इज अ कोफैक्टर. द एंजाइम, right, the protein part which is actually inactive is called as an apoenzyme. When it is inactive, you use the term apoenzyme. कोफैक्टर उसमें ऐड होगा. ये देखो कोफैक्टर यहां पे ऐड होगा. जब वो कोफैक्टर ऐड होगा तब उसकी एक्टिव साइट कंप्लीट होगी, और एक्टिव साइट कंप्लीट होगी तो सबस्ट्रेट उसमें फिट हो पाएगा. तो जब एपोएंजाइम और कोफैक्टर साथ में आते हैं तो बनता है होलो एंजाइम. राइट, प्लीज अपोएंजाइम और होलो एंजाइम दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. अपोएंजाइम अगर आया तो वो इनएक्टिव है, होलो एंजाइम आया तो वो एक्टिव है. अपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम. कहीं लिख के रख दो ऊपर प्लीज. राइट, नाउ आवर डिस्कशन इज अबाउट दिस कोफैक्टर. Now these cofactors are of three types. Right? This is the last paragraph of your discussion in biomolecules. The cofactor could be a prosthetic group. Right? One of the features of a prosthetic group is that they are tightly bound to the apoenzyme. Tight, the bond is very strong. For example, peroxidase catalase. Right? Peroxidase is responsible for breaking down of hydrogen peroxide to water and oxygen. The prosthetic group is heme. Heme is the prosthetic group. The second category is a coenzyme. थोड़ा सा संभाल के यहां पे. Coenzyme is a type of cofactor. Coenzyme is a type of cofactor. Please. यहां गलती मत कर देना प्लीज. कोफैक्टर ऊपर है, कोएंजाइम उसके नीचे है. कोएंजाइम का एसोसिएशन इज एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट. ये देखो यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप का एसोसिएशन विद द अपोएंजाइम इज टाइटली बाउंड. कोएंजाइम का एसोसिएशन इज वेरी ट्रांजिएंट. वो भी जब कैटालिसिस करना है, रिएक्शन करना है तो साथ में आएंगे. वंस हो गया फिर अलग अलग. And many of the coenzymes का component are vitamins, like coenzyme NAD and NADP, nicotinamide adenine dinucleotide, or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. It contains vitamin niacin. Please remember niacin is B3. Niacin is vitamin B3. So they might ask you, instead of niacin, they might even ask you B3 का association. So B3 में, राइट ना, द NAD कोएंजाइम का एक केमिकल कंपोनेंट इज B3. एंड व्हाट इज NAD? इट इज अ कोएंजाइम. व्हाट इज कोएंजाइम? इट इज अ कोफैक्टर which makes the activity of the apoenzyme complete. And the last group can be metal ions. They form coordination bonds. Right now, see, I've just marked in bold those points are important. ये tightly bound है, ये transient है, ये coordination bond बनाता है. Right? And यहाँ पर example is zinc. Right? Zinc is a cofactor for proteolytic enzyme carboxypeptidase. Right? It's a enzyme which breaks down protein, और उसका cofactor is zinc. Right? So I hope this discussion has been clear for us. What is the enzymes and what are the different aspects about an enzyme. Right? Thank you all so much for joining the discussion. See you all. Bye.